So if we talk about the introduction, so most of the substance around us undergoes various changes. Some of these changes are temporary with no new substance being formed. They are called physical changes. So physical changes is what? Physical changes what? मीन्स कहने का ये मतलब होता है मेरा कि अगर सब्सटेंसेस में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, so that is called physical changes only. Physical changes means maybe its temperature is changing, its pressure is changing, okay, its volume is changing, but no new substance is made up of. Means plastic is not changing. If you have plastic, that is not changing, okay, there is no change, but maybe that its temperature is changing, its pressure is changing, its volume is changing, okay. And in certain other changes, the new substance formed in which the reactant or the parent loses the its identity to form new substance called product. If A plus B gives a C plus D, if A plus B gives C plus D, then C is called C is called product. C and D is called product. Okay, C and D are called product, and A and B are called reactant. These are called reactant. A and B are called reactant. Are you getting me or not? Yes, sir. Okay. So these changes are permanent changes as we won't get the reactant back. So A और B जब ऐड हो गए ना तो C और D मिल गए हमको. अब C और D से हमको A और B नहीं मिल सकते. ठीक है. मीन्स कहने का ये है कि जैसे हमारे पास if we have coal, okay, so कोल को जब हम लोग यूज कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है बता? Ashes. ऐश बन जाती है. और उसके बाद उससे आप क्या कोल को वापस ले सकते हो? No, sir. नो. ओके. सो वही बोला गया है यहाँ पे. क्लियर है ना? So this is some introduction, basic introduction, nothing else. Okay. Now after this, if we talk about the chemical reaction. Now what is chemical reaction? Do you know about chemical reaction? What is? It is Hmm, permanent reaction in which the form changes permanently. yeah. So chemical reaction is the process by which two or more substances react with each other to form new substance with a different properties. Okay, this is important point that we have two or more than two substances that are these are reacting with each other, okay, and forming some new substances. Okay, consider that A B plus C gives D plus E. So this is a type of chemical reaction or not? Yes, sir. This is a type of chemical reaction. Okay, this is a type of chemical reaction. Uh, just take an example. Consider that N2 N2 plus 3H2 gives 2NH3. Okay, 1 mole of nitrogen, 1 molecule of nitrogen, and 3 moles of hydrogen gives 2NH3. Means NH3 means what? NH3 means what? Ammonia gas. N2 means what? Nitrogen gas. And H2 means what? Hydrogen gas. Okay, are you getting me or not? Yes, sir. ओके. अच्छा, आपको वो याद है क्या, क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक नंबर्स वगैरह पीरियोडिक टेबल में? No, sir. नहीं है? अरे यार, ओहो. चलो उनको कराता हूँ, ठीक है. Okay, sir. Okay, listen. So at the first we should learn the some element and its their atomic numbers.
So first is hydrogen. Okay, so atomic number of hydrogen is 1. No, these, but not all of them, like the basic ones. Means what? Like I know for hydrogen, nitrogen, or zinc, aluminium, or Hmm. these all basic ones. Okay, okay, okay. So what is the atomic number of neon? Uh, No. Atomic number of aluminium? Al, Yes. Sodium? Na, Atomic number? uh, 3. What? Um, I think you don't remember. Nah? yes. Okay, so no problem. Okay, listen. Atomic numbers. Okay, and name of element. Name of element. Clear? Yes. Okay. I'm drawing a table to learn this table properly. Okay. Yes, sir. Why your camera is off today? Sir, I turned it on, but on my screen it's just black screen and my name written on it. I Okay. Yes. So if we talk about the atomic numbers, they start from 1 to, wait a minute. Yes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. So we have to learn these all atomic numbers and their elements. So first is hydrogen, helium, lithium. Okay. So H is what? Hydrogen, Hydrogen. H is hydrogen. And what is He? helium, Helium. What about Li? lithium, Lithium. What is B? boron, No, beryllium. Okay. B is boron. B is boron. C is carbon, carbon. N is nitrogen, nitrogen. O is oxygen, oxygen. Very good. F is iron, fluorine. Fluorine. Iron is Fe. Iron is Fe, not F only. Ne means neon. Okay. So these are the atomic number and their name of element from 1 to 10.
but we have to learn more than 10. Okay, we learn approx 1 to 20 approx. So at the first, this table is very important to you. Okay, now we talk about the another table. Okay, I'm going to erase it. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. So what about 11th number? Do you know? No, sir. Sodium. What is 11? Sodium. Yes. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. NaMg, Al, Si, Ps, Cl, Ar, C, K, Ca. Okay. So what is Yes. Na? Na Sodium. is yes. Na is sodium. Na is sodium. What is Mg? Magnesium. Magnesium. What is Al? Aluminium. Aluminium. Okay. What is Si? Silicon. Silicon. What is P? Potash. नहीं. Phosphorus. S is S is sulfur. Yes, sir. Okay. Cl Yes. is Fluoride. chlorine. Fluoride is another thing. Chlorine. That is chlorine gas. AAAR organ. K is Potassium. potassium. And what about Ca? Calcium. ठीक है, तो आपको वही यहाँ से 1 to 20 तक आपको ये याद होने चाहिए. ठीक है, आर यू गेटिंग मी और नॉट? Yes, sir. तो ये आप याद कर लोगे ना? Yes, sir. हाँ, इनको नोट किया था क्या? मैं नोट्स दे दूंगा, देख लेना उसमें. ठीक है. Okay, sir. हम्म. चलो, तो हम लोग बात कहाँ कर रहे थे? केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन? यस, यही चल रहा था, केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया था, जैसे मीन्स A plus B gives C plus D, that is called chemical reaction. Okay, if A plus B gives C plus D, that is called chemical reaction, and A and B are called reactant. A and B are called reactant, and C and D are called product. C and D are called product, and A and B are called reactant. Okay, so this is a very simple definition. I think that you are getting this all. So these are the following changes to determine that the chemical reaction has taken place. Means change in the state. State means maybe A in a state of solid and C is in a state of gas or liquid, maybe. Okay, so we can say that there is a change in state takes place. After that, if we talk about the change in color,
maybe A is of yellow color and C is of means green color. C is of green color and A is yellow color, maybe na. So if the color of reactant and product are changing, so we can say that chemical reaction takes place there. Evolution of gas and the change in temperature. Change in temperature is most important factor in the chemical reaction. Okay, so these are the main important features of the chemical reaction. Sir, these all factors, are they necessary? That is, Yes, they are necessary. Very nice. They are very necessary. Change in stage should be takes place. Change in color should be takes place. Evolution of gas that and the change in temperature should be takes place. ये होना ही चाहिए, ठीक है. yes. अदरवाइज केमिकल रिएक्शन का कोई मतलब नहीं था. जैसे मान लो आप, लिसन, if A plus B gives okay, listen, I'm taking an example. Okay, consider that N2 plus 3H2 gives 2NH3. Okay, so what about N2 and H2? These are all reactant. These are all reactant and NH3 is product. NH3 is product. So we can say that there is a change in temperature. That is compulsory. Temperature is changing in this reaction. N2H2 जब मिलाए गए होंगे, मिक्स करे गए होंगे, तो टेम्परेचर कुछ और रहा है. जब अमोनिया गैस बनी है तो टेम्परेचर कुछ और होगा. Are you getting me? Yes, sir. ओके. कलर भी चेंज हो सकता है. N2 का कलर कुछ और होगा, H2 का कुछ और होगा, और अमोनिया गैस जो बनी है उसका कलर कुछ और हो सकता है. जरूरी नहीं है ना कि N2 अगर येलो है या H2 व्हाइट है तो अमोनिया भी येलो या व्हाइट बनेगा. हो सकता है कि वो ग्रीन बन जाए, कुछ भी हो सकता है. If we add two colors, then we know very well that some other color will form. Yes, And sir. there is a change in state also. In this example, N2 and H2 is gas and ammonia is also gas. बस in some but in some examples that अभी हम आगे देखेंगे कि सॉलिड था, रिएक्टेंट हमारा सॉलिड था, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बना है हो सकता है वो गैस हो जाए या कुछ भी और हो सकता है, लिक्विड हो जाए, ऐसा. ठीक है, सो ये फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ. इज इट ओके और नॉट? आई थिंक इज इट ओके ना? Yes, sir. ओके Sir, नाउ. changing यस. temperature में सिर्फ रिएक्शन के टाइम में टेम्परेचर चेंज होएगा या प्रोडक्ट में भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं, जब रिएक्शन हो रही होगी ना, जब रिएक्शन हो रही है, जैसे ए और बी मिलके सी और डी, जैसे ये इक्वेशन देखो आप, ये इक्वेशन देखो यहाँ पे. ओके, लुक एट दिस इक्वेशन. लुक एट दिस इक्वेशन. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि आयरन जो है वो किस स्टेट में, देखो सॉलिड स्टेट में. H2O देखो गैसियस स्टेट में. अब यहाँ पे देखो ये बना Fe3O4, तो ये सॉलिड स्टेट में, और हाइड्रोजन देखो गैसियस स्टेट में. ठीक है, Yes, sir. समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है ना, Yes, सॉलिड sir. गैस मिलके जो है सॉलिड गैस बना रहे हैं. अब यहाँ पे आयरन था ना, तो इसमें आयरन आया तो ये सॉलिड की एक्ट करेगा, सॉलिड हो जाएगा वो. अब बात रही टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में ऐसा होता है कि जब आयरन और H2O मिलता है तो टेम्परेचर कुछ और रहा होगा उस केस में. फिर जब रिएक्शन हो रही है, व्हेन द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, व्हेन द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, so temperature is different from initial temperature. Okay, Yes, sir. and when the product is formed, so the temperature is different, maybe, or okay. Yes, sir. Okay, now if we talk about the chemical equation, what is chemical equation?
So we can say that a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. Okay, symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae, wherein the reactant entities are given on the left hand. लेफ्ट हैंड में क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, अभी मैंने बताया था जैसे a plus b gives c plus d. So a plus b are reactants, means the element of left hand side are reactants which are reacting with each other and forming some other thing, forming some other product. These are known as product. Means in the chemical reaction, the right hand side products are right hand side elements are known as products. Okay, are you getting me now? Yes, sir. Okay, now so left hand side and the product entities on the right hand side. So we are seeing in this question, in this reaction, that magnesium and oxygen is reactant because they are reacting with each other to form magnesium oxide. Magnesium and oxygen are reacting with each other to form magnesium oxide. So we can say that magnesium oxide is the product and magnesium and oxygen are the reactant because they are reacting. The element who are reacting are known as reactant. Very simple. Bolo. Yes, sir. Any problem? No, sir. Okay. So this is known as chemical equation. Okay. Yes, sir. Chemical equation is a symbolic representation. Okay, nothing else. Symbolic representation means if a plus b gives c plus d, so this is nothing but a symbolic representation. Symbolic representation, nothing else. So this is known as chemical reaction. This is known as chemical reaction. Sorry, chemical equation. This is known as chemical equation. Okay. So if anybody is asking to you that what is chemical equation, so what will you say? What will you answer? How will you define chemical equation? It is a symbolic representation of of- of- Yeah, symbolic representation of. It is a of symbolic representation of reactant and product. Simple. yes, sir. Okay. और अगर आपसे कोई पूछता है कि इस इक्वेशन में वेयर आर रिएक्टेंट्स कहाँ हैं इस इक्वेशन में, क्या बोलोगे? On side. क्या? On the left side. On the left side. The left side element are known as reactant and a plus b are known as reactant. And what about product? The element who are in the right side, these are known as product. These are called product. Yes, sir. And a plus b are known as reactant. Yes. Okay. Yes, sir. So I think that this is clear to you. Yes, sir. Any problem? If you are facing, then ask me. No, sir. Okay. तो ये आपको नोट्स ठीक लग रहा है ना? Sir. बहुत टाइम लगा इनको बनाने में, पता है? Okay, now if we talk about the balanced chemical reaction, a balanced chemical reaction or balanced chemical equation means what? The chemical equation that shows the chemical reaction needs to be balanced. Means अभी देखो मैंने एक एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो, N2 plus 3H2 gives 2NH3. Have you remembered this example? Yes, sir. Okay, what is N2? No. What is N2? Nitrogen. What about H2? Hydrogen.
And what about NH3? Ammonia. Ammonia gas. Okay. So N2 and 3, N2 and S2 are known as product or reactant? Product. Product. Wow, very nice. Product are forming. Product are mixing to each other to form a reactant. How is this possible? N2 and 3, N2 and S2 are product in this equation. Mm, They are reactant, yeah. yes, sir. They are not product. Okay. Yes. At the first, they are reactant. Actually, this is a reversible equation. This is a reversible equation. Look at the arrow I'm making. Look at the arrow. Which type of arrow is this? This is known as reversible reaction. Reversible. Reversible का मतलब if A plus B gives C plus D, then C plus D gives A plus B. मतलब रिएक्शन दोनों साइड से चल सकती है. मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कार होती है ना, कार आगे भी जाती पीछे भी जाती है बैक गियर में. Yes, sir. समझ रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल इक्वेशन. और जब सिंपल ऐसा एरो लगा होता है तो इसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल इक्वेशन. ये रिवर्स नहीं हो सकती. जैसे यहाँ पे आप देखो इस एग्जांपल को, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. तो यहाँ इस इक्वेशन में ये Zn and H2SO4 are reactant. Zn and H2SO4 are reactant, and ZnSO4 and H2 are product. Okay. Yes, sir. बट ये इक्वेशन में ऐसा नहीं हो सकता. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ZnSO4 plus H2 gives Zn plus H2SO4. This is a wrong equation. Okay, it is not possible because this equation is not reversible. ठीक है, ये एक साइड से ही हो सकती है, दूसरे साइड से नहीं हो सकती. Sir. Are you getting me or not? Yes, sir. Okay. Now we'll talk about the balanced chemical equation. So what is the meaning of balanced chemical equation? Balanced chemical equation means nothing but we have to count the numbers. जैसे मतलब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है नाइट्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टोटल, मान लो कि यहाँ पे 3 नहीं लिखा था, चलो ओके, ये लो, Yes. ऐसा है मान लो. तो अब हमको इसको बैलेंस करना है. वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. नाउ हाउ मेनी नाइट्रोजन वी हैव इन दिस इक्वेशन? 2. 2. On the left side we have 2 nitrogen, and how many hydrogens we have? 2. 2. But if we are seeing in the right side, how many nitrogen we are having in this equation? 3. 3 or 1. I am talking about nitrogen, not hydrogen. There are only 1 nitrogen. Yes, sir. And how many hydrogen are there? There are 3 hydrogens. Okay, so this equation is not balanced. Balanced means what? LHS should be is equal to RHS. This is known as balanced equation, huh? Yes, sir. Okay, so we are seeing that at the left hand side there are 2 nitrogen atom, but in the right side there are only 1 nitrogen atom. So we will multiply this nitrogen atom by 2. So we can say that now there are 2 nitrogen atom and on the right side, and 2 nitrogen atom on the left side. So nitrogen is balanced now. Nitrogen atom is balanced now. Yes, sir. नाइट्रोजन बैलेंस हो गया ना दोनों साइड से. अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की. नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाइड्रोजन एटम. सो वी आर सीइंग इन द राइट साइड डायरेक्शन there are 3 into 2. 3 into 2 hydrogens means 6 hydrogen are atom. 6 hydrogen atom are there in the right side in this equation. Look at this equation. 3 into 2. 3 into 2 what? That is 6. Yes, sir. Okay,
So there are 6 hydrogen atoms in the right side, but in the at the left side we are seeing that there is only 2 hydrogen atoms. So we will multiply this hydrogen atom by 3. So 3 to the 6. So 6 hydrogen atoms are in the left side and 6 hydrogen atoms are in the right side. Yes, sir. Okay, so we can say that this equation is become balanced now. This equation is balanced now. Yes, sir. How many nitrogen atoms are there in the left side? 2. Okay, wait a minute. I'm cleaning something. Okay, now if I am asking that how many nitrogen atoms are there in the left side? How many nitrogen atoms? 2. 2. There are 2 nitrogen atoms at the left side. And if we talk about the right side, so how many nitrogen atom? 2. 2. So nitrogen atom are balanced now. Yes, sir. Okay. Now how many hydrogen? How many hydrogen at the left side? 6. 6 hydrogen at the left side. And what about the right side? How many hydrogen atoms are in the right side? 6. 6. So we can say that now this equation is balanced now. This equation is balanced now. Yes, sir. Okay. So this is known as balanced chemical equation. This is known as balanced chemical equation. Simple. The chemical equation that shows the chemical reaction need to be balanced. The chemical equation need to be balanced. Okay. Balance means what? The number of atom at the left side should be equal to the number of atom at the right side of the chemical equation. So this is known as chemical balanced chemical equation. Are you Yes, sir. getting me? Yes, sir. Okay, now a balanced chemical equation occurs when the number of the atom involved in the reactant side. Reactant side means what? At the left side or right side? Reactant side means what? I'm The left. talking of, huh? No, the oh, the left side. Left side. Reactant side means left side. Okay. So the reactant side is equal to the number of atom in the product side. Product side means what? Right hand side. Product side means what? Right hand side. Are you getting me or not? Yes, sir. Okay. So in this heading, we are having 2 examples. So at the first, I'll erase everything to make it clean. After that, we'll understand this example, this equation that is given in this. Okay. So this is an example. The equation is Zn plus H2SO4. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. So this is a chemical equation that is given, and this equation is balanced or not? Can you say about this all? This equation is balanced or not? So how will we find that this equation is balanced or not? By counting the number of atom at the left side and after that of the right side. We will have to count the number of atom na? Okay, read this line. A balanced chemical equation occurs when the number of atom involved in the reactant side is equal to the number of atom in the product side. So number of atoms should be equal in the left hand side and right hand side. So if we talk about what is Zn? Can you name Zinc. this element? What is Zn? Zinc. Zinc. Okay. So how many zinc atom present in the left side in this equation? 1. One atom. Okay, now if we talk about the right side, so how many zinc atom are presenting? 1. One. So Zn is balanced. Yes, sir. Zn is balanced. Okay. Now if we talk about hydrogen,
So how many hydrogen atoms are present in the left side? 2. 2. And in the right side? 2. 2. So hydrogen is also balanced. Yes, sir. Okay. Now if we talk about the sulfur, S is what? S is what? Sulfur. Sulfur. So how many sulfur atoms present in the left side of the equation? No, 1. Only one. Yes, sir. And at the right side? 1. 1. So sulfur atom is also balanced. Okay. Yes, sir. What about the oxygen atom? How many oxygen atom are in the left side? 4. 4 atoms. And on the right side? 4. 4. So oxygen atom is also balanced. Okay. Yes, So we can say that this equation is completely balanced. What we can say? What we can say? this equation is balanced. Yes. So we can say that this equation is completely balanced. This equation is completely balanced. Okay. Yes, sir. So in this way, you have to count the number of atom as why I was counting. Okay. Yes, sir. आपको ऐसे ही काउंट करने हैं. Zn देखो लेफ्ट साइड में कितना है, राइट साइड में कितना है. हाइड्रोजन देखो लेफ्ट साइड में कितना है, राइट साइड में कितना है. सल्फर देखो लेफ्ट साइड में कितना है, राइट साइड में कितना है. फिर ऑक्सीजन को देखो लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है. Okay. So in this way you have to count all the number of atoms, and the number of atoms on the left side should be equal to on the right side. That Yes, sir. we can say that that equation will be balanced chemical equation. I think this topic is clear. Yes, sir. If you have any doubt, if you are facing any problem, then ask me. No, sir. Okay. अच्छे से clear हो गया ना सब कुछ इतना? Yes, sir. Okay. Now if we talk about the second equation that is given in the example form. So the second equation is this. Okay. This is the Yes. second equation. So if we talk about Fe plus H2O, forget 4 and 3. Okay. Now we will balance this equation. We will balance this equation. At initial, this equation is not balanced because I am not writing it 3 or 4. Okay. Yes, sir. Fe3O4 plus H2. Now, can you balance this equation, and how will you balance this equation? Tell me that how will you balance this equation? We will have to count and see if the atomic number on both sides of the equation is equal. Atomic number nahi, number of atom. Atomic Yes. number nahi. We are not talking about the atomic number. We are talking about the number of atoms. Look at here. Look at here. Number of atoms. क्या लिखा है? Okay. What is this? Number of atom na? Yes, sir. Number of atom in the left side and the number of atom of the product side should be equal. Yes, sir. Okay. So we are talking about the number of atom, not the number of not the क्या कह रहे थे आप? Atomic number, है ना? Atomic number नहीं देखना है, number of atom देखना है. तो बैलेंस इसको कैसे करेंगे? चलो बताओ कैसे काउंट करेंगे? आप स्टार्ट करो. चलो बताओ. लेफ्ट साइड में एफ में 1 एटम है, राइट साइड में 3 एटम्स है, तो लेफ्ट साइड में ही लिख देंगे. हाँ, वेरी गुड. यहाँ in the left side, if we are seeing that there is only one iron atom, and at the right side there are three iron atoms. So we need 3 iron atom at the left side. So multiply this
iron by 3. So we can write it as 3Fe. Okay. Okay. After that, if we talk about the oxygen atom, so we are seeing that in this equation at the right side, there are 4 oxygen atoms. Yes, sir. There are 4 oxygen atoms, but at the left side, we are seeing that there is only 1 oxygen atom. So Yes. what we should do? We should add a 4 in this H2O, and Yes, then he will add um a 4 in H2 as well on the very right. nice, very nice. If we add 4 with H2O, so oxygen will be oxygen के तो 4 एटम हो जाएंगे, but हाइड्रोजन के अभी कितने एटम हो गए अपने पास? There are 8 atom of hydrogen at the left side. Yes, So sir. we need 8 atom of hydrogen at the right side also. So Yes, we sir. should add 4 with H2. Now we can say that this equation is completely balanced. This equation is completely balanced. Yes, sir. If you have any doubt, you may ask. No, sir. Now this equation is completely balanced. Okay. Yes, sir. Okay. What is Fe? Can you name this element? What is Fe? Iron, Iron. And what is H2O? hydrogen oxide, Hydrogen oxide or water. yes, sir. This is simply water. What is Fe3O4? Iron oxide, Iron oxide. Very good. Iron oxide. And what is H2? hydrogen, Hydrogen. Hydrogen gas. Actually, this is a gas, so I will show it by this arrow. Gas है ना, तोड़ जाएगी ऐसे ऊपर. yes, sir. Okay. Yes, sir. So I think that this is all clear to you or not? Yes, sir. Okay. I'm erasing everything. Okay. Yes, sir. Now we'll move next topic. Okay. Now, if we talk about the types of chemical reactions, so we are seeing that first is combination reaction. So what is combination reaction? And with combination reaction, at the first I am showing all the name. First is combination reaction, second is exothermic reaction, next is endothermic reaction. एंडो और एक्सो अभी एक्सप्लेन करूंगा तभी आएगा समझ. फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके. और ये यहाँ पे मैंने ये बताया है. ठीक है. फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके. रेडॉक्स रिएक्शन. इतने सारे रिएक्शंस हैं. ओके. So at the first we'll start. So first is a combination reaction. So combination reaction is what? Such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction. That means if A and B are forming only C, only one product is formed. There is only one product. A and B are known as reactant. A and B are known as reactant, and C is the product in this equation which are forming. Okay. And we are seeing this equation that there is only one product. That is C. So this type of chemical reaction is known as combination reaction. Are you getting me or not? Yes, sir.
This type of reaction is known as chemical combination reaction. If only one product is forming by two or more than reactants, two reactants, means A plus B plus C plus D gives E. So there is only one product, na? Number Yes, of sir. reactant should be two or more than two. There is no problem in the number of reactant. But there is a condition that in combination reaction, there should be only one product, not more than one product. Okay. Yes. So look at this equation. CaO plus H2O gives CaOH whole twice. So consider that this equation is given. Okay. So can you name the CaO? Can you name CaO? What is CaO? क्या होता है इसका क्या नाम CaO? ने का क्या? कैल्शियम ऑक्साइड. Calcium oxide. Very good. So CaO is called calcium oxide. Calcium oxide. Okay. And what is H2O? H2O is simple है, जल वाटर होता है. CaOH वोल्टोइज क्या होता है? ये कैसे लिखा है पता है ना तुमको? ऐसे लिखा हुआ है ये CaOH वोल्टोइज, समथिंग लाइक दिस. ओके. यस सर. हाँ, वो टू थोड़ा ऐसे आ गया ना साइड में, मतलब जैसे मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई नहीं, वो ऐसे वोल्टोइज लिखा हुआ है, तो इसको आप समझ लेना अपने हिसाब से. ओके. अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले कि कुछ फैक्टर्स करते हैं काम. कौन कौन से फैक्टर्स थे? टेम्परेचर था, स्टेट था. स्टेट भी तो था, मैंने बताया था कि सॉलिड से हो सकता है लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो अब इस इक्वेशन में देख लो, CaO जो गिवन है तो वो किस स्टेट में है? देखो सॉलिड में. H2O is in liquid state and the CaOH voltaic is forming, that is in aqueous state. Okay, so we are seeing in this equation that state is changing continuously and there is only single product. So this equation is known as combination reaction. याद रहेगा? यस सर. So अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या बोलोगे? It is a reaction where two or more reactants react and form only one product. Okay, so this is known as combination reaction. I think it is this is clear to you now. Yes sir. Okay, now we'll move further now. So calcium oxide reacts with water to produce slag lime, that is the calcium hydroxide, that is known as calcium hydroxide. Calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide. ये जो इतने सारे ये नेमिंग वगैरह हो रही है ना, ये याद होनी चाहिए आपको. CaOH वोल्टेज क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके. रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को रिलीज कर रहा है. अब अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को रिलीज कर रहा है तो CaO प्लस H2O को जब मिलाया था तो उतनी हीट थोड़ी ना थी, तो टेम्परेचर का भी तो देखो चेंज हो रहा है यहाँ पे. पता हो रहा है? टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है. टेम्परेचर आल्सो चेंजिंग in this equation. Yes sir. Okay, now a solution of slag lime produced by the reaction is used for white washing balls. So calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide. देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है? CaOH voltage means what? Calcium hydroxide. CaOH voltage means what? Calcium hydroxide. So calcium hydroxide is reacting with the carbon dioxide gas. CO2 is what? Carbon dioxide gas. CO2 is what? Carbon dioxide gas.
So it is forming calcium carbonate, that is CaCO3, and we are seeing that the state of CaOH whole twice is aqueous, and CO2 is in a state of gas, but the calcium carbonate that is forming in the product side, so its state is solid. Are you getting me? What am I Yes, sir. saying? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? Yes, sir. मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टेट चेंज हो रही है, देखो स्टेट इज चेंजिंग, हो रही है ना? Yes, sir. अच्छा चलो ये बताओ कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं. दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट. हाउ विल यू चेक दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट? हाउ विल यू चेक? How will you check that this equation is balanced or not? The numbers on the left side and on the right side, number of atoms on the left sides and on the right sides are not equal. Not equal? Yes, sir. Not equal means what? Oh, you are talking about this equation. Yes, sir. No, I am asking you in a general way. If any equation is given to you, then how will you say that this equation is balanced or not? If the That number is, of atom on the left side and the number of atom on the right side are equal, then this is known as balanced equation. If they are yes, not equal, so we can say that that is a unbalanced equation. Okay. yes, sir. So now if we check that this equation is balanced or not, so you are saying that this equation is not balanced. Okay, Yes, sir. we'll check about this. So we are seeing that at the left side calcium as an atom, this is one, and this is also one. Now if we talk about the oxygen atom, so how many oxygen atom are there in the left side in this equation? How many oxygen atom at the left side? Count them fast. 2. No, oxygen atom, I'm talking about single oxygen atom. How many oxygen atom are there? These are 2 oxygen atoms because it is written as O2. Yes, sir. And OH whole twice. OH whole twice means what? There are 2 oxygen and 2 hydrogen. Yes, Okay. sir. So there are 2 plus 2, that is 4 oxygen atom at the left side. 4 oxygen atom at the left side. Okay. Yes, sir. Now if we talk about the hydrogen atom, so how many hydrogen atoms are there? Hydrogen atoms कितने हैं? Um, 2. There are 2 hydrogen atoms. H2 is written na. H2. H2 means what? There are 2 hydro. hydrogen atoms. Yes, sir. नहीं आ रहा समझ में ना? सर वो ब्रैकेट का नहीं आ रहा समझ में, वो ब्रैकेट में क्यों लिखा है? अरे देखो ऐसा है, चलो बताओ ऐसा लिखा है, इसका क्या मतलब है बताओ? 2x + 2y. नहीं प्लस कहाँ लगा है? इसका मतलब ये हुआ ना कि x और y का जो भी प्रोडक्ट होगा उसका डबल है 2, उसका डबल करना है हमको. 2 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? डबल करना है ना. यस सर. तो वही चीज तो ये हो रही ना कि ऑक्सीजन भी 2 है हमारे पास और हाइड्रोजन भी 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट नहीं एटम है. यस सर. ठीक है. जैसे अगर लिखा हुआ है OH होल ट्वाइस, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के भी 2 एलिमेंट है और हाइड्रोजन के भी 2 एलिमेंट है. एलिमेंट नहीं, सॉरी मैं बार बार एलिमेंट बोल रहा हूँ. ठीक है. एटम. ऑक्सीजन के भी 2 एटम है और हाइड्रोजन के भी 2 एटम. आप समझ गए? यस सर. तो वही चीज है ना. यहाँ पे बताओ कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के पास? 2. 2 है. टोटल 2 नो. + 2 ना 4 हो गए टोटल. और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2. 2 है. अब हम बात करेंगे कार्बन की, तो कार्बन कितना है? हाउ मेनी कार्बन्स? 1.
1 है। बात आ गई समझ आपको? Yes, सो sir. हाउ मेनी कैल्शियम एटम? हाउ 1. मेनी कैल्शियम एटम? ओनली 1। नाउ ऑक्सीजन एटम, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। Yes. एंड हाइड्रोजन एटम, there are 2 hydrogen atoms. And if we talk about the carbon atom, so there is only 1 carbon atom. Yes, Is it sir. clear or not? Yes, sir. So this is a reactant side. This is a reactant side. Now if we talk about the right hand side is what? Product side. Right hand side is what? Product side. Okay, Yes, are you sir. getting me or not? Yes, sir. Okay. So if we talk about the product side, so we are seeing that how many calcium atom are there in the product side? How many calcium atom are there? 1. Only 1 calcium atom are there, na? Yes, sir. So calcium atom is 1. Now if we talk about the oxygen atom, so we are seeing that okay, आप बताओ कितने ऑक्सीजन एटम है? टोटल कितने ऑक्सीजन है इसमें? 4. 4। ये 3 हो गए और ये 1 है तो 4 हो गया ना? Yes, sir. Okay, now carbon atom, how many carbon atoms are there in the right side of the reaction? 3. 3? No, not 3. देखो अगर ब्रैकेट लगा होता, सुनो यहाँ देखो, अगर ऐसे ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, फिर ये ऐसे कुछ लिखा हो यहाँ पे, तो इस ब्रैकेट से मतलब हो जाता है कि ये 2 दोनों के साथ में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है CaCO3, तो ये 3 सफिक्स में सिर्फ O के साथ है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है ना। Yes, अच्छा sir. सुनो, अच्छा एक तरीके से और बता रहा हूँ, सुनो सुनो। जैसे अगर लिखा है 2x + y, तो इसका क्या मतलब है? 2 जो है वो सिर्फ x के साथ ही तो हुआ, कि y के साथ भी हो गया? X के साथ सिर्फ. x के साथ ही है ना। क्यों है x के साथ? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया। Yes, और sir. अगर यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लगा होता, तो अब इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो x और y दोनों के साथ में। Yes, sir. तो वही चीज यहाँ पे है। तो जैसे अगर इस टाइप से लिखा हो OH होल ट्वाइस ब्रैकेट लगाओ, तो आप समझ जाना कि ये जो बाहर नंबर है वो इन दोनों के साथ में, Yes, ठीक sir. है। और अगर सिर्फ ऐसे लिखा हो CaCO3 सफिक्स में लिखा हो, ये जो 3 है ना, ये नीचे है, सफिक्स में है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। मतलब यहाँ हमेशा जैसे ये लिखा है, जैसे ये H2O लिखा है, तो ये 2 आप समझ जाना कि ये नीचे की तरफ है, सफिक्स में है। H2O ऐसे लिख रहा है। जैसे ये लिखा है CaOH होल ट्वाइस, तो ये कैसे लिखा होगा? ये ऐसे लिखा होगा CaOH होल ट्वाइस। ये 2, अब देखो मैं वो टाइपिंग में वो आ नहीं पाया ना यार, मैं समझ रहा हूँ ना बात को। Yes, sir. हम्म। तो अब बताओ कि यहाँ पे मैं बात कर रहा था कार्बन की, तो कार्बन कितने हैं? ये जो 3 है, अब बता दो आप मुझे ना, ये 3 किसके साथ है? ये 3 किसके साथ है? CO के साथ सिर्फ. अरे नहीं भाई फिर वही बात, ये 3 जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा है। Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, sir. यहाँ देखो ना, OH में ब्रैकेट लगा था, इसलिए जो ये 2 था वो O के साथ भी था और H के साथ भी था। तो इस एग्जाम्पल को बस समझ लो कि अगर ब्रैकेट लग गया तो ये 2 x और y दोनों के साथ है, और ब्रैकेट अगर हट गया तो ये जो 2 है वो सिर्फ x के साथ रहेगा। Yes, sir. तो यहाँ CaCO3 अगर लिखा हुआ है, तो ये जो 3 है ना वो सिर्फ और सिर्फ O के साथ है और किसी के साथ नहीं है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और तो बताओ फिर कार्बन कितने हो गए? 1. 1 हुआ ना सिर्फ। Yes, sir. ओके, अब क्या बचा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 1. नहीं, 2. 2 है ना। Yes, sir. तो बताओ ये बैलेंस है कि नहीं? देखो, Yes, sir. दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। Yes, sir. क्लियर हुआ इतना सब? Yes, sir.
तो बात समझ गए ना, कॉम्बिनेशन Yes. रिएक्शन का क्या मतलब होता है, बैलेंस रिएक्शन का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं और रिएक्टेंट क्या होता है, समझ गए ना अच्छे से? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है भाई, अब मैं एक चीज थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? Yes, sir. देखो सुनो, जैसे अगर लिखा हो, जैसे मान लो CO2 गैस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि कितने ऑक्सीजन एटम है? 2, 2 है। और कार्बन कितने हैं? 1. 1। ठीक है, अगर इसमें मान लो ऐसे लिखा हो, 3 का मल्टीप्लाई हो रखा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रखा है इसमें, अब बताओ कितने कार्बन एटम हो गए? 3, 3। और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6. 6। वेरी गुड। मतलब ये है कि जब ये आगे नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे मान लो मैं लिख दूं 4, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4, तो अब ये जो 4 है ना, वो अब हर एक एटम के साथ में है, लेकिन जो नंबर पीछे लिखा होगा वो सिर्फ उसी के साथ होगा जिसके साथ वो लिखा है। जैसे अगर इस 2 की बात करी जाए तो ये 2 तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही रहेगा, लेकिन अगर इस 3 की बात की जाए तो ये 3 कार्बन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। मेरी बात क्लियर हो गई होगी अब? Yes, sir. इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. डाउट तो नहीं है? पूछ लो, देखो डाउट हो तो बता दो अभी, No, sir. क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बिल्कुल 9 10th ना, 11 12 में बहुत यूज होगा इन चीजों का। फिर आपके टीचर बोलेंगे दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो आप बोलोगे लो सर ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन तो मैंने पढ़ी नहीं है। समझ रहे हो ना? Yes, sir. ओके, सो आज अपन यहीं तक रखते हैं क्लास को। Okay, sir. ओके, सो अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब इसके बाद कल है ना अपनी क्लास? हाँ कल है, तो नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, मतलब इसमें आगे जो भी पार्ट मैंने आपको बताए थे तो उनको अपन कल स्टार्ट कर देंगे। कौन सा वाला था? जैसे हमारा है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट्स ओके। Yes, तो sir. कल स्टार्ट करते हैं इसको आगे नेक्स्ट, ओके। और आपको Okay, sir. कोई प्रॉब्लम है